रेडियो जिंदगी लिसनर्स बने हैं आप मेरे साथ 1550 AM पर listening to a show which is beneficial for not only your growth, your happiness, and your prosperity, also about you learning more about yourself, you knowing more about what your charts, what your placement of your planets in your charts is. You guessed it right, the Saket Bhatia Astrology Show एक बार फिर से लेकर आए हैं हम। Every Tuesday 4 to 5 p.m. लाइव सुनते हैं आप डॉक्टर साकेत भाटिया को, who is internationally renowned astrologer, has a PhD in the subject of astrology and is a certified numerologist. 25 years का experience है उन्हें, more than 12,000 plus satisfied clients हैं उनके globally, and he is a board member of International Association of Vedic Astrology and Numerology. And this show is for all the listeners जो सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने बारे में, अपनी कुंडली के बारे में, अपनी स्टार्स के बारे में। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो एनी टाइम ड्यूरिंग द शो यू कैन गिव अस अ कॉल. डॉक्टर भाटिया इज लाइव विद अस. 5107701550 स्टूडियो लाइन का नंबर है, और यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद हिम by calling 408-639-5300, या फिर आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं जहां सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको उनके बारे में. द वेबसाइट इज बाय हिज फर्स्ट एंड लास्ट नेम saketbhatia.com. With that, let's begin our show today. Hello and welcome. Happy Tuesday, Dr. Bhatia. Happy Tuesday, Vedika, and good afternoon to all the listeners. Radio Zindagi. It's always a pleasure being here, and I'm delighted that you're tuned in, that you're listening to my show. We have an interesting show today. पिछले हफ्ते हमने फोर्थ हाउस को इंट्रोड्यूस किया था. This week we will continue talking about the fourth house. This is one जी, of the most important houses, ना? तो ये एक एपिसोड में खत्म नहीं हुआ. तो दो एपिसोड है, and I'm going to try my level best to finish it this week. absolutely. And listeners, as I reminded you that आप कॉल कर सकते हैं स्टूडियो लाइन पे by dialing 5107701550. If it is an astrology related question, be ready with the date, time, and place of birth. You can also ask Vastu or numerology related question as well. So feel free to reach out during the show anytime. G, let's start. So I think important is पिछले हफ्ते हमने fourth house discuss किया था astrology में. Why don't we go ahead and revisit the fourth house? What is it we spoke about? And then we will start with today's show. That makes sense? It will take a Absolutely. few minutes. एक recap करते हैं. G. So last week हमने introduce किया था fourth house. Aries, Taurus, Gemini, Cancer. Cancer is the fourth house. The sign Cancer इसे हम हिंदी में कर्क राशि कहते हैं. The natural ruler of this sign is the moon. And Cancer का symbol होता है crab. Now think about all this. Crab, हमने कहा था, is one of those rare creatures that actually carries its shell on its body, which is its own home. Fourth house is your home. Moon is mind, emotions, nurturing ability, your full fundamental needs for comfort and security. ये fourth house से दिखता है. जैसे moon reflects light of the sun, same way fourth house reflects your inner emotion. So when people come to me and say, I'm very sad, I'm depressed, I'm not happy, I can't make friends, people cheat me, I give and give, but I don't get anything in return, we must look at the fourth house. We must look at the moon. Moon is the lord of the fourth house. Cancer is run by the fourth house. हमने कहा था कि Cancer is a water sign. Okay? Water G. जो है, it is a fluid. It basically takes any shape. It adjusts, it accommodates, it's receptive. Water is something everybody needs. That's why you need your fourth house. Fourth house is like one जो family को जोड़ता है साथ में. Regardless of what things are, the fourth house is critical for your real life functioning. फिर हमने कहा था कि जो फोर्थ हाउस है ये एक केंद्र घर है. केंद्र के घर होते हैं 1, 4, 7 and 10th house in Vedic astrology. First house is you, everything about you. Fourth house is emotions, happiness. Seventh house is business, partnership, marriage. And 10th house is career. Mhm. बट ये जो फोर्थ हाउस है ये एक और ट्रेडिशनल वैदिक सिस्टम में इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोक्ष हाउसेस. अगर आपको मोक्ष मिलेगा या स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, वी स्टडी दिस फ्रॉम द फोर्थ, एथ एंड ट्वेल्थ हाउसेस.
ये 4, 8, 12 जो है ये कहते हैं कि आप लाइफ में कितना मोक्ष पाओगे, कितनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, एंड हाउ सक्सेसफुल यू विल बी ऑन दैट पैथ। हाउ गिविंग आर यू इन लाइफ, आप कितना चैरिटी कर सकते हो, दूसरों की कितनी हेल्प कर सकते हो, ये हमें फोर्थ हाउस से दिखता है। सी, लाइफ इज नॉट बैलेंस्ड, इट इज नॉट फेयर ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू लर्न टू गिव। आपको जो करना है आप करो, आगे से मिले नहीं मिले दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सो फोर्थ हाउस की सिग्निफिकेशंस आर वन, हमने लास्ट टाइम कहा था मातृकारका, विच मीन्स everything related to your mother जी, and your mother's side of the family. relationships, yeah. Sukh, relationship. Sukh, happiness, comfort, emotional contentment. Grah, home, property, real estate. Vidya, education, early education. Bachelor's degree भी fourth house से पढ़ी जाती है. Vahan, which is cars, modes of transport. How many planes, houses, boats, yachts you'll have? Fourth house. मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में फोर्थ हाउस इज द फोर्थ ऑर्गन विच इज द हार्ट। तो अगर आपकी फोर्थ हाउस लॉर्ड सन एंड मून सब पे असर पड़ रहा है, then you automatically become a candidate for heart problems in life because fourth house rules the heart, Mhm. and fourth is also your hriday and the inner mind and psyche of how it works. हमने ये सब कवर किया था लास्ट वीक के एपिसोड में। जी, फिर हम कोर थीम्स पे आए थे, डू यू रिमेम्बर? जी, फोर्थ हाउस ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें बताता है अबाउट योर लाइफ। सो योर हाउस एंड ड्वेलिंग स्पेस, आप घर कहाँ लोगे, कितना बड़ा होगा, कितना पुराना होगा, कितना नया होगा, इज थ्रू द फोर्थ हाउस। यू नो, Vedika is very interesting. Some Mhm. people have multi-story house, two-story, three-story house, right? जी, Some people have a single story, single family house, one Mhm. level. Mhm. किसी किसी का घर बहुत चौड़ा होता है, किसी का लंबा होता है। You'll be very surprised, fourth house में ये दिखता है। People have a preference, right? There are Wow. many people who say, I don't want a two-story house, I want one story. And I asked one person why, they said, well, 3,000 square foot का अगर दो story में लेंगे तो it is 1,500 square feet on each floor. Here I'm getting 3,000 on one floor, I have more place to walk around. Okay, this is seen in your fourth house. वास्तु में हम आपका चौथा घर देख के कहते हैं, what is the better place for you? If you cannot buy a northeast or north facing house, तो वास्तु के हिसाब से फोर्थ हाउस देख के कहेंगे कि where your door should open, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। जो Mhm. फोर्थ हाउस लॉर्ड है ये भी कहता है कि what is the best career you're going to get. For example, अगर आपका फोर्थ लॉर्ड 10th में बैठा हो, then you can do a career related to home stuff. For example, real estate, interior decoration, domestic services. अगर आपका फोर्थ लॉर्ड 8th में बैठा है, you can deal with other people's money. Fourth house is also dealing with family dynamics. ये जो है ये marriage and relations and maternal relations सब पे है. How जी, happy will you be with your husband or wife? For that we will study fourth house lord, Jupiter or Venus. अगर मदर के साथ रिलेशन देखना है, फोर्थ हाउस लॉर्ड मून। मदर के ब्रदर्स, मदर के दैट इज योर मामा, on mother's side, nana, nani. It is all fourth house. There are related planets to that. Agar moon strong ho, your emotions are strong, your ability to nurture is strong, your ability to receive and give is very strong. Waxing moon agar ho, to you will give more. Agar waning moon ho, then you will complain more. It is just natural. okay. So Many people in, we have a yeah, caller waiting since long time. Can we quickly take a call first? sure. Hello, you're on air with Dr. Saket Bhatia. Thanks for holding. Okay, thank you. Yeah, go Hi, how ahead. are you? Hi, I'm good. So I just graduated and I'm looking for a job. So I have a question like when will I get a job? Congratulations on graduating. Let's start with that. What did you graduate Thank with? you. Master's degree in electrical electronics engineering. That should have been the first thing you should have said. I graduated with a master. It's a big thing. So, how can I help you? What is your date of birth? Tell me. It's 3rd November 1999. Okay, and your time of birth? Uh, I'm not sure about the time.
That makes it very difficult. What is your place of birth? Uh, I think it's around 6 or 7 p.m. Okay. What is your place of birth? It's Gandhinagar. Which one? Gandhinagar? Yeah. Okay. Gandhinagar. Gandhinagar in Gujarat, right? Yes. So if you're born at 6 o'clock, your ascendant is at 15 degrees. If you're born at 6, or if you're born at 5, or if you're born at 7, आपकी चार्ट ज़्यादा चेंज नहीं होगी. Okay. You just Okay. graduated, you're looking for job. For job, we'll study 10th house, 6th house. 6th house is house of service. उसमें वीनस है, debilitated है, केतु है. केतु को उस घर से निकलने दो. केतु gets out of that house in the next 3 months. So you're not looking very positive for the next 3 months. उसके बाद जो दशा Okay. आती है, that is Mars Venus, which is Mars and Venus are 7, 8, 9, 10. You're running a career dasha. I would say you have to wait another 3 months before some positive aspect comes. कोई positive aspect नहीं है at this time on your career, unfortunately. आप graduate हो गए, give it some time, at least Okay. another 2 to 3 months before anything meaningful is going to continue. Mars Venus dasha is strong. You will get a job in this dasha. Absolutely, there is no question. Okay, good luck. Okay. Bye. Thank you so much. To all the listeners who are tuned in, if you also have any question, you can call us right now on 510-770-1550, or you can always connect with Dr. Saket Bhatia directly. You can make an appointment and talk to him. The number would be 408-639-5300 to connect with him directly, or you can write to him info@saketbhatia.com, or the website where you will get all the information is saketbhatia.com. You were talking about waxing and waning moon. I was talking about how waxing moon is more emotionally stronger. It's more giving, less receiving. अगर उन्हें नहीं भी मिलता, they're okay. Waning, on the other hand, जितना दोगे उतना मिलेगा या complaint ज़्यादा मिलेगी. I also said about how moon represents home, fourth house, but fourth house also represents ancestral inheritance from the mother side. हम काफी बार देखते हैं कि in astrology there are people who receive single children, they receive money or inheritance from father, but mother side also should be seen. Traditionally it is not in Indian culture to give from the mother side, but we do see that very often in families कि mother side से भी inheritance हो रही है. जी. Other things we do see is real estate property matters. आपको लाइफ में कितने घर लेने हैं? Do you want to trade in property? Do you want to buy and sell homes? Do you want to become a realtor? This is all with fourth house. So fourth house is a critical house. अगर fourth house second में चला गया, you will make money through property. Start buying and selling houses, start buying houses, renting them out, good business for you. Fourth house seventh में चला गया, you will get property through marriage. Fourth house ninth में चला गया, hopefully you'll get a very large mansion once you become more lucky and spiritual. Fourth house 10th में चला गया, then property will be related to career or public standing. Government officials जो होते हैं, we generally see fourth lord in 10th. They get property through the government. They get housing through them, right? Mm-hmm. तो वो खत्म करने के बाद we'll start today's topic, which is the Karaks. Karak जी. of the fourth house, okay? Okay. Karak is significator. A significator means how much you are going to enjoy that thing in your life. Hmm. फोर्थ हाउस के कारक बहुत हैं. जनरली एस्ट्रोलॉजी में जो 12 घर हैं, दे हैव द फॉलोइंग कारक्स. फॉर हाउस 1 इट इज सन, हाउस 2 इट इज जुपिटर, हाउस 3 इट इज मार्स, हाउस 4 इट इज मून, then again it is Jupiter for house 5, then it is Mars for house 6, it is Saturn for house 7, and so on. हर एक घर का एक मेन कारक होता है, but there are secondary कारक्स for all the houses. जनरली एस्ट्रोलॉजी में हम नहीं चाहते कि कारक अपने घर में बैठा हो. इफ द कारक represents a living thing, for example, first house में sun नहीं होना चाहिए. It makes your bones and teeth weak.
It ruins your health in the long run. You will always have accidents and diseases, no matter what. Same way, fourth house का कारक moon है. We almost never want moon, which is mother, to be in the fourth house. It will have problems, difficulty for mother. It's a great placement. Moon जो है उसे directional strength मिलती है fourth house में. That means moon fourth house में बहुत strong हो जाता है. But at the same time, you will be more emotionally attached to your mother, preventing you from growing, or mother will always be anxious and worried about you, or mother will always stay at a far off distance compared to you. But कुछ तो होगा life में जी, where your mother and you will not enjoy that relationship that you could have enjoyed. we have a caller waiting. Can we quickly take a call Sure. meanwhile? Hello, Yes. you're on air with Dr. Saket Bhatia. Thanks for holding. साकेत, थैंक यू। साकेत जी नमस्कार, मेरा नाम संजय है। Namaskar कैसे हैं? Sanjay, how are you? आई एम डूइंग गुड। I have one question regarding my career. I am thinking to change Okay. my job, but I am unsure. I'll give you my date of birth, 8th June Okay. 1921, Okay. Time of birth, 5:30 p.m. And the place of place birth, of birth is Parsa, Bihar. So it is near Saran, near Chapra. Parsa, Bihar. Okay. Yeah. P-A-R-P-A-S-R-A-H-A? Pashra? No, Parsa, Parsa. And you say it is close to Saran. Chapra, yeah, close to Chapra. Yes. Okay. So what is your question? I'm thinking to change my job. I'm looking for a change. Okay. Is this a right time to change it? You're changing in your field or you want to change your field also? No, I'm changing in my same field. I'm not changing. And what are you doing right now? Are you there? Hello? Yes, I'm there. I'm there. Yeah. So What are is you your doing field? I'm in sales. ये IT sales. important होता है. Okay, IT sales. So आपकी जो कुंडली बनती है, you're a Scorpio ascendant. इसे हम वृश्चिक लगन Correct. कहते हैं. आपका मून जो है, जी। इट्स इन जेमिनाई, इसे मिथुन राशि कहते हैं. और आपका जो नक्षत्र है, वो पुनर्वसु नक्षत्र है. आपके 10th हाउस में सैटर्न जुपिटर बैठे हैं विद गलिका मंडी. इसका मतलब जब जब शनि जुपिटर या सन की दशा आएगी, इट इज नॉट एडवाइजेबल फॉर यू टू चेंज योर करियर. अब जुपिटर बैठा है, अब दशा राहु मर्क्यूरी की चल रही है. ट्रांजिट में केतु इज स्टिल आउट ऑफ दैट हाउस, और आई कैन से 2 महीने में केतु आपके 10th हाउस पे आ रहा है. दैट इज नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर यू. केतु शनि पे आएगा, 1.5 year वहां रहेगा. सो डोंट चेंज. इफ यू कैन गेट अ जॉब चेंज नाउ, इट इज बेटर. द रीजन आई सेड नाउ इज क्योंकि राहु मर्क्यूरी है, और राहु एंड मर्क्यूरी 9 houses दूर हैं, विच रिप्रेजेंट लक. इस कुंडली में राहु रिप्रेजेंट्स वीनस, एंड वीनस मर्क्यूरी वैसे ही फ्रेंड्स है. मर्क्यूरी इज अ सेकेंडरी कारक ऑफ करियर. इफ यू कैन गेट अ जॉब नाउ, बिफोर नाउ एंड जून 1st, डू इट. अगर जून 1st तक नहीं Okay. मिलता है, देन आई रिकमेंड यू वेट. You wait for at least another 6 months before you try. It is not in your favor. Otherwise, go. Okay. Should be good. हम हमेशा पूछते हैं which is your field. We want to make sure you're in the right field, you know. That's why. So good luck to you. I think अब कर लो तो it will be too late. Okay? Thank you. Thank you. मेरा No worries. नक्षत्र ज्येष्ठा है, correct? आपका नक्षत्र is पुनर्वस? पुनर्वासु नक्षत्र. पुनः- ज्येष्ठ नहीं है. पुनः- Okay. 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 Thank you. You can go on my website also. वहां पर you can enter your birth details and you will get information like what is your nakshatra, what is your ascendant. हिंदी में, इंग्लिश में कौन सी दशा चल रही है, वो तो Yeah, I it think will that give you all that. exercise everyone should do, can do, of course. जा सकते हैं saketbhatia.com website पे. Just put your details and you can see your chart.
And you can try and understand. And if there is some issue, there is some confusion, do connect with Dr. Bhatia, of course. Ji, we were talking about the Karaks of fourth house. Moon is the primary karak. Ji. Moon governs emotional well-being. Uh, it also talks about mother, mind, emotional responses, need for security and comfort. कुंडली में मून की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. Mhm. अगर मून फोर्थ हाउस को देख रहा है, बैठा है या फोर्थ हाउस में है, देन फोर्थ हाउस बहुत स्ट्रांग हो जाता है. वेल प्लेस्ड मून विल इंडिकेट गुड रिस्पॉन्स, गुड लव फ्रॉम मदर, गुड रिलेशनशिप विद मदर, गुड इमोशनल स्टेबिलिटी इन योर हाउस. आप घर जाके खुश रहोगे, घर जाके डरना नहीं, घर जाके गुस्सा नहीं होना. Phases of the moon are also important. अगर मून आपका वैक्सीन वेनिंग हो, then sometimes it will cause some stress up and down in your life. सेकेंडरी कारक स्टार्ट करते हैं. वीनस. व्हाट इज वीनस, विवेका? वीनस इज कंफर्ट, लग्जरी, Luxury. हार्मनी. Ji. You've always said luxury on every show. It is also it that is is also that is my association with the planet. it is also comfort and harmony, Ji. right? Venus, Shukra. In fact, Jupiter ke baad the second most beneficial planet in a kundali is always Venus. In fact, it is so strong that Venus is almost as strong as Jupiter in many cases. You know that? Oh. Venus को हम शुक्र कहते हैं. Ji. ये जो फोर्थ हाउस का है, इट रिप्रेजेंट्स ब्यूटी, हार्मनी, लग्जरी, कंफर्ट, प्लेजर डिराइव फ्रॉम डोमेस्टिक लाइफ, खुशी जो आपको घर पे मिलेगी. एंड इट ऑल्सो सेज द कार्स एंड स्टफ यू हैव. अगर वीनस फोर्थ हाउस को देख रहा है या फोर्थ हाउस में बैठा है, देन यू विल हैव जनरली अ वेरी क्लीन ब्यूटीफुल हाउस, एस्थेटिक टचेस. ऐसे घर होते हैं लोगों के कि लोग देख के बोलते हैं, वाओ दिस इज ब्यूटीफुल. छोटा हो बड़ा हो, बट इट्स ब्यूटीफुल. ऐसे घरों में पीपल हैव अ गुड हार्मनी इन देयर लाइफ. फैमिली रिलेशंस अच्छे रहते हैं, मैटरनल कंफर्ट्स बहुत मिलते हैं. वीनस ये भी देखता है कि हमारा सेंस ऑफ प्लेजर क्या है. सम पीपल विल ईट ऑन अ कार्डबोर्ड प्लेट एंड सम विल ओनली ईट इन द फाइन चाइना बोन्स, राइट? दिस इज व्हाट वीनस विल शो यू अबाउट योर हाउस. पुरानी किताबों में वीनस इज एसोसिएटेड विद व्हीकल्स. आपकी कितनी गाड़ियां होंगी, किस तरह की गाड़ियां होंगी, properties will all be through Venus. So again, if Venus is sitting in the fourth house, Mercury fourth house में बैठा है साथ में, it almost indicates you're going to be a realtor, right? Mercury is business, Venus is property. It's a very easy placement कि आपका घर इन दो चीजों से चलेगा. The next house we will talk about Karak is Mercury, which is planet of wit, wisdom, education and learning, correct? Right. मर्क्यूरी जिसे हम बुध कहते हैं, ये कारक है इंटेलेक्ट का. अर्ली एजुकेशन, फाउंडेशनल लर्निंग, कम्युनिकेशन पैटर्न्स विद इन द फैमिली, इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट ऑफ चाइल्डहुड, बेसिक नॉलेज, फंडामेंटल स्किल्स. हमने देखा है कि जब भी मर्क्यूरी फोर्थ हाउस में बैठता है, द किड्स टेंड टू बी वेरी फोकस्ड ऑन एजुकेशन. पेरेंट्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट ऑन लर्निंग. खुद बैठ के पढ़ाते हैं. हमारे एसोसिएशन ने होम स्कूलिंग पे एक स्टडी की है, and we've seen a huge number of kids who are homeschooled almost always have Mercury in the fourth house. Mercury's huge emphasis on learning, it is also property matters associated with communication, education, commerce, office properties, real estate investment. People who have Mercury in the fourth house are generally lucky. अच्छी placement है, they do well. Because remember, Mercury किसी living organism का कारक तो है नहीं, so it won't do any damage there. Venus also will not do any damage there. Only Moon does damage. अब next कारक पे आएंगे Jupiter पे. Jupiter represents wisdom, growth and expansion, right? He's also the planet of luck, grace. जब Jupiter इसका कारक हो और इस घर को देखता है, तो घर में spiritual atmosphere बनाता है. जितने पंडित हैं, जितने बच्चे धार्मिक हैं, we see a good aspect of Jupiter on the fourth house. इस घर में wisdom होती है, which is received from the family, passed down from generations. इनकी जो property है, ये बढ़ती है. They have lots of land, but they don't have the best houses. They have huge blessings in family and domestic life. And philosophical foundation जो है, ये childhood से ही आ जाता है इनके अंदर. Jupiter
पहले भी कहा है, इज अ गुड प्लैनेट, वन ऑफ द बेस्ट प्लैनेट्स। जब यहाँ देखेगा, it will do good. Larger homes, larger properties may not be the best home, but larger homes. Vedic text में it is also auspicious. When it is sitting there, आपकी ancestral property आपसे छूट नहीं जाती. It remains in your family lineage. चलते रहता है आपकी family के अंदर. Okay? जी. And finally, दो और कारक बचे हैं. Shani and Rahu Ketu. Let's talk about Shani. Shani is also a karak. Yes, Shani is also karak of marriage stability. He's also karak of length of life. But जब शनि फोर्थ हाउस का कारक बनता है और फोर्थ हाउस में देखता है, then he gives stability of property. Remember I told you, Shani is suffering, but Shani is also stability. Shani makes And you even appreciate what property, it has association with your real estate, your property. Venus is property, but Saturn is the property you will inherit. Venus Okay. कहेगा बड़ी मिलेगी कि छोटी मिलेगी, अच्छी मिलेगी, बुरे मिलेगी. बट Mm-hmm. अगर शनि वीक है तो छोटा घर मिलेगा, शनि स्ट्रांग है तो बड़ा घर मिलेगा. Okay. Shani makes you work for what you get. Shani is, it will delay property for you. Shani will delay the house. But जब देगा तो बहुत बड़ा देगा. Because he makes you work for it. Right. Disciplined approach चाहिए to saving money for your house. He will delay stability also in your life. शनि जहाँ बैठ जाता है, Bhrigu Saral Padati, there is a book written which talks about 16 or 18 universal rules in astrology which have been tried, tested and applied. उनमें कहा है कि शनि अपनी दशा में अपने घर से चौथे घर में दशा एस्पेक्ट करता है, नॉट थर्ड. एंड जहां शनि बैठता है वहां लॉ है. अपनी दशा में शनि विल गिव यू लैंड, ही विल गिव यू प्रॉपर्टी इफ ही इज एस्पेक्टिंग और सिटिंग इन फोर्थ हाउस. बट केयरफुल अटेंशन इज नीडेड. ही इंडिकेट्स फैमिली बर्डन, emotional restraint. Generally, mother is very strict in this house. Mother wants certain rules done her way in this house. Disciplined बच्चे आते हैं. Mm-hmm. Foundation अच्छा होता है. And finally, we are talking about the two planets or two nodes, Rahu and Ketu, Ketu. जो fourth house के भी कारक होते हैं. We've already talked about Moon, Venus, Mercury, Saturn, Jupiter. Jupiter. Now we are talking Rahu, Ketu. The only missing planets are Mars and Sun, who are not कारक्स. राहु एक कॉम्प्लेक्स कारक है फोर्थ हाउस का. राहु जब इस घर को देखता है या इस घर में बैठा है, अनकन्वेंशनल होम सिचुएशन देता है. पहले भी कहा था, अगर आपका फोर्थ हाउस डैमेज्ड है, जनरली इट इंडिकेट्स यू विल लीव योर लैंड, यू विल मूव टू अ फॉरेन लैंड. Right. दैट इज अनकन्वेंशनल. फॉरेन इन्फ्लुएंस देता है आपके घर पे, फॉरेन प्रॉपर्टी होगी. You will have big status when you want to buy a house. It will be a, राहु जहां बैठता है वो डिजायर देता है, वहां एक्सपेंड करना है. तो जिनका फोर्थ हाउस में राहु बैठता है, दे वांट अ बिगर हाउस. दे वांट टू शो ऑफ, इनसे हमारा घर बहुत बड़ा होना चाहिए, नो मैटर व्हाट. एक इल्यूशन देता है कि घर फैमिली मेंबर्स को कैसे सपोर्ट करे, कैसे बड़ा करे, लेकिन होता नहीं वो प्रॉपर. इट्स अ इट्स अ साइकिल, जो तुम उसमें जितना डालो वो उतना ही घूमते रहता है. एंड फाइनली देयर इज केतु. राहु इज एक्सपेंशन, केतु इज नॉट कॉन्ट्रैक्शन, केतु इज कंफर्ट जोन. इट विल नॉट मेक यू ग्रो वेर एवर इट सिट्स. जब केतु इस घर में आ जाता है तो एक स्पिरिचुअल डिटैचमेंट देता है फ्रॉम होम. यू टेंड टू गेट कनेक्टेड टू पास्ट लाइफ, पास्ट प्रॉपर्टीज, पास्ट लोकेशंस. जिस घर में रहोगे, हमारा एंसेस्टर का घर है, हम नहीं छोड़ेंगे. ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का है, यहीं पर हमें रहना है. स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट घर में रहता है. दे डोंट मेक मेनी मॉडिफिकेशंस इन द हाउस. बेसिकली दे आर सो कंफर्टेबल लिविंग इन द हाउस कि उन्हें कुछ चेंज नहीं करना. देयर इज नो ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन दैट हाउस. ये जो फैमिलीज है ये भी ठीक है. these are basically soul lessons from your past incarnations. तो Okay. आई एम प्रीटी श्योर यू हर्ड ऑफ दिस, राइट, कि हम पुराने घर में रहते हैं, हमारी फैमिली जी. का है, पूर्वजों का है, सब साथ में मिलके रहेंगे. वो स्टडी जी. दैट चार्ट, इट इज केतु. ऑन Okay. द अदर हैंड, अभी का भी घर तोड़ के नया बनाते हैं, 2 साल बाद नए घर में मूव करेंगे, फिर नए घर में मूव करेंगे, या 2 घर लेंगे, उन्हें रेंट करके उसका जो ईएमआई है वो भरते रहेंगे. दैट इज राहु.
So everything plays a very important role. So I've discussed how planets जो कारक होते हैं when they aspect a certain house, what they do. But the rule is still not over. We still have to see कि इस घर में जब planet बैठे हैं तो क्या असर देते हैं, इस घर में जो ट्रांजिट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अगर फोर्थ हाउस की जोडियक साइन क्या हो वो क्या होती है. So if you were to come and say, I want an astrology session with you, okay, you will send me your date, place, time of birth, and then we will start reading your chart. अब जब हम आपकी चार्ट पढ़ते हैं, we'll ask you questions. You'll say, भाई हमारा घर नहीं आया या घर में सुख शांति नहीं है. Immediately fourth house. कारक, which house is there, उस पे ट्रांजिट क्या है, उस पे एस्पेक्ट्स क्या हैं, और जो उसका जोडियक साइन है वो क्या है. उसके बाद ही हम आंसर दे सकेंगे. एंड डोंट फॉरगेट, डिग्रीज भी देखनी पड़ती है. करेक्ट. जी. टेक्स टाइम. I hope people understand that it takes a lot of time to get one right answer to you. Definitely. And इसीलिए listeners, don't wait longer if you are looking at some opportunities, if you are willing to grow this year and make a big switch, or you have another opportunity in hand which you are not so certain about taking, or whether to move forward or not, anything which is confusing you or anything you are uncertain about future, do connect with Dr. Saket Bhatia, who is live on Radio Zindagi right now and every Tuesday 4 to 5 p.m. द साकेत भाटिया एस्ट्रोलॉजी शो सुन रहे हैं आप, और इस शो के दौरान डॉक्टर भाटिया टेक्स क्वेश्चंस. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप कॉल कर सकते हैं 5107701550. दैट्स द स्टूडियो लाइन नंबर. वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्थ हाउस टुडे, बट यू कैन आस्क एनीथिंग regarding astrology, numerology, and Vastu. And if you would like to connect, make an appointment, and have a detailed consult with Dr. Bhatia, feel free to reach out at 408 639 5300, or through the website. You can get the information about office location and the ways to connect with him. And the website is saketbhatia.com. Or you can write to him if you have any particular question you would like to discuss. Email him at info@saketbhatia.com. Again, the studio line number for a quick question. We are just halfway through the show. We can take some calls. 510-770-1550 is the studio line number. So next, we are going to talk about the planets and the signs affecting the fourth house, right? I think वो important है. Mm-hmm. अभी हमने कहा कारक क्या होते हैं, जब कारक घर को देखता है what they represent. अब बात करेंगे कि planets जो fourth house में बैठते हैं उनका impact क्या है. See, if you go on my website and you enter your date, place, time of birth, and you go ahead and make your kundli, through the show you will get a lot of answers कि आपके घर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, and how you need to deal with it. फोर्थ हाउस की बात है तो फोर्थ हाउस पे फोकस कीजिए. लेट्स टॉक अबाउट प्लैनेट्स इन द फोर्थ हाउस. सन. सन इज अ हॉट प्लैनेट, राइट. जी. जो हॉट प्लैनेट होता है वो जहां बैठता है थोड़ा सा बर्न कर देता है. जब सन फोर्थ हाउस में बैठता है, इट बेसिकली बर्न्स योर अपब्रिंगिंग, योर आउटगोइंगनेस. ये फैमिली हेरिटेज, एंसेस्ट्रल कनेक्शंस पे बहुत लोग अटक जाते हैं. इट्स नॉट बैड, बट इट्स नॉट वेरी गुड ईदर. इस घर में जनरली वी हैव सीन ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर या फादर जो है वो एक डोमिनेंट फिगर हो जाते हैं. दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन हाउस. काफी पिक्चरें भी देखते हैं इंग्लिश हिंदी मूवीज वेयर देयर इज वन ग्रेट ग्रैंडफादर और ताया जी हु रन्स द होल शो इन द हाउस, राइट. विदाउट दैट पर्सन नॉट मच इज डन. दैट इज बिकॉज सन जो डोमिनेंट पर्सन है वो वहां बैठा है. दे शेप योर पर्सनैलिटी, योर कोर वैल्यूज. ये प्लेसमेंट नेचुरल लीडरशिप रोल होते हैं फैमिली वैल्यूज और स्ट्रक्चर में. अगर मून आपके फोर्थ हाउस में बैठा है तो हमने कहा है यू विल बी डायरेक्टली टाइड टू सिक्योरिटी एट होम. घर में आपको खुशी मिलेगी, घर अच्छा चलता है. बट अगेन, नॉट द बेस्ट प्लेसमेंट फॉर मून बिकॉज इट इम्पैक्ट्स योर मदर्स रिलेशनशिप विथ यू एंड और मदर्स हेल्थ. अगर मर्क्यूरी फोर्थ हाउस में बैठा है देन इट इज एन एक्टिव इंटेलेक्चुअल लाइफ. घर में इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होंगी, स्टिम्युलेटिंग डिस्कशंस फॉर द माइंड. होम बेस्ड लर्निंग एनवायरनमेंट हमने कहा वो होता है. बट यू मैन ऑल्सो encourage न्यूमरस रिलोकेशंस इन योर लाइफ. क्योंकि मर्क्यूरी जो है ये एक प्लैनेट है जो बहुत फास्ट मूविंग है, एंड ही मेक्स पीपल मूव.
I have seen people who, you know, left India, they went to Singapore, then they went to Australia, then they went to London, then they went to Canada, then they came to US, and now they're going to move back again. This is Mercury. ये बहुत बहुत move कराता है लोगों को. Venus is all focus on family relationships, affection, diplomacy, beauty. Invest in creating a very nice harmonious house. Mars. अगर मार्स आ जाता है ये तो एक एक्टिव प्लैनेट है, एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट. इट्स अ कंपेटिटिव एनर्जी. ये जो लोग होते हैं ये घर रेनोवेट बहुत करते हैं, होम इम्प्रूवमेंट बहुत करना है. आई वॉन्ट टू चेंज माई बाथरूम, आई वॉन्ट टू अपग्रेड. ओके, पीछे ईडीआई बनाना है. ओके, हमें घर के ऊपर सोलर डालना है. अब गराज हमारे 2 गाड़ी फिट नहीं होती, तीसरा बनाना है. बट मार्स ऑल्सो कैन रिलेट टू पोटेंशियल आर्ग्यूमेंट्स इन द हाउस. गुस्सा, झगड़ा, अगर मार्स ठीक नहीं हो. रिमेंबर, शनि इज अ प्लैनेट ऑफ हार्ड वर्क, डिसिप्लिन. मार्स इज अ प्लैनेट ऑफ अग्रेशन, एंगर. अगर शनि मंगल कोई घर में बैठ जाते हैं साथ में, या शनि मंगल एक घर को देख रहे हैं, then it usually hurts that house because you will take actions quickly and then regret it, then wait for too long to take the next action, then take another one too quickly, then again wait for some time before you can correct it. जुपिटर वो तो एक्सपेंशन है. जुपिटर जब वहां आएगा तो स्पिरिचुअल नॉलेज देता है घर में, वो पहले भी डिस्कस किया है. और जब शनि वहां है, then sense of duty, sense of responsibility towards your family. जनरली बच्चों की कुंडली में जब शनि यहाँ आता है, दे टेक गुड केयर ऑफ देयर पेरेंट्स. एक स्ट्रक्चर्ड Okay. अप्रोच होता है फैमिली पे कि क्लियर वैल्यूज, क्लियर बाउंड्रीज, क्लियर एक्सपेक्टेशंस कि हमें ये करना है, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू. और जैसे जैसे बड़े होते हैं, इट इम्प्रूव्स विद एज. इट ब्रिंग्स विजडम इनटू दैट पर्सनस लाइफ. सो दीज आर व्हाट वी हैड टू डिस्कस. We अब बात करेंगे साइंस की. यस, जी. Before that, can we take a call? श्योर. Hello, you're on air with Dr. Bhatia. Go ahead. Saket ji, namaskar. नमस्कार, हाउ आर यू? I'm good. Thank you. I have a very specific question कि जो जन्म कुंडली होती है उसमें ग्रह अगर स्ट्रांग है, वीक है, और गोचर कुंडली में जो ग्रह अगर स्ट्रांग एंड वीक है, तो दोनों का क्या रिलेशन होता है? व्हाई डू यू केयर अबाउट गोचर सो मच? क्योंकि जैसे अभी मैं सुन रहा था कि शुक्र उच्च का है मीन राशि में, और मेरी जो जैसे अगर कुंडली से मैच करूँ तो शुक्र नीच का है. तो ऐसे में क्या समझा जाए इससे कि शुक्र अभी कुछ पीरियड फायदा मुझे देगा, नहीं देगा, या कुछ, इसलिए मैं जानना चाह रहा था कि दोनों का रिलेशन क्या है जन्म कुंडली और गोचर कुंडली में. देखो, वी ऑलमोस्ट ऑलवेज स्टडी ओनली द जन्म कुंडली. गोचर कुंडली में वो ट्रांजिट चार्ट हो जाती है, राइट? करेक्ट. हम्म. हमने एक शो किया था जिसमें कहा था कि ट्रांजिट शुड ओनली अकाउंट फॉर 33% ऑफ रीडिंग. दशा विल अकोमोडेट फॉर मोर. तो लेट्स अज्यूम आज आपकी कुंडली में वीनस ऊंच का है, करेक्ट, और गोचर में यू आर सेइंग कि ट्रांजिट में वीनस नीच का हो गया, करेक्ट. हम्म. एक तो वीनस इज अ वेरी फास्ट मूविंग प्लैनेट, तो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स का ट्रांजिट तो हमने ज्यादा स्टडी करना नहीं, बिकॉज दे आर barely गोइंग टू बी इन द हाउस. इन जनरल, ट्रांजिट में डू नॉट वरी सो मच अबाउट ऊंच एंड नीच. ऊंच नीच का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज जनरली टाइड ओनली टू योर मेन कुंडली. अभी नवंश कुंडली होती है आपकी, राइट? नवंश में कैन अ प्लैनेट बी डिबिलिटेटेड, यस और नो? एक क्वेश्चन है आपके लिए. शायद नहीं, मेरे ख्याल से. देखिए, राशि में डिबिलिटेशन होता है, नवंश में डिबिलिटेशन कैसे हो सकता है? क्योंकि नवंश की डिग्री तो कैलकुलेट की नहीं. डिबिलिटेशन मींस राइट. वन एग्जैक्ट डिग्री. सेम वे आपके जो ट्रांजिट है उसमें डोंट वरी अबाउट रेट्रोग्रेड, यस, बट डोंट वरी अबाउट गोचर में कि हमारा ऊंच का है कि नीच का है. डोंट वरी, एज लॉन्ग एज द प्लैनेट इज ट्रांजिटिंग and he is going to give the relevant results. Focus on dasha and focus on strength of the planet in the kundali. तो अगर आपका वीनस उच्च का है, वीनस उसके ऊपर आ गया, अच्छा रिजल्ट देगा. नीच का भी है तो थोड़ा कम देगा, लेकिन फिर भी अच्छा देगा. इट्स नॉट गोइंग टू कॉज डैमेज. ओके, ओके जी, थैंक यू. चलो, बाय. Ji, we were about to talk about signs affecting the fourth Yes. house.
You seem very excited about the signs. No, actually, I'm more excited about the correct time of the property purchase and sale, which you said that we'll be discussing today. का टाइम मिलेगा तो ना. That's why I'm jumping on topics so that we should come to that. And I'm certain listeners must be excited for that as well now. Are you planning on selling or buying a house? Let me see what the time, if the time is correct. Listening to you again and again, I know that चीजें सही समय पे करनी चाहिए तभी उनका पूरा फायदा मिलता है. तो अब पहले साइंस की बात करते हैं, हाउस की बात में करते हैं. जी. अगर आपका फोर्थ हाउस एरीज में है, राइट? हम्म. एरीज क्या है? डायनामिक साइन है, राइट? सो इट विल ब्रिंग डायनामिक एनर्जी टू योर होम. जिनका घर एरीज में है, दे विल ट्राई टू बी लीडर्स ऑफ देयर हाउस. घर में सबको बोलेंगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एटसेट्रा. इट ऑल्सो कॉजेज सम कॉन्फ्लिक्ट्स इन द हाउस बिकॉज ऑफ दैट. ट्रेडिशनली ये जो है, ये कॉन्फ्लिक्ट वाला है. वी डोंट लाइक एरीज बीइंग इन द फोर्थ हाउस बिकॉज डोमिनेशन ज्यादा हो जाता है. तो थिंक, अगर दो लोग हों, दोनों का एरीज फोर्थ हाउस में हो, हस्बैंड वाइफ का, तो पोटेंशियल फॉर कॉजिंग domestic conflicts is very large because of impulsive nature. Mars is an aggressive planet, na? And Aries is ruled by the planet Mars. Especially अगर दोनों की कुंडली में मार्स ही बैठा हो तो बहुत झगड़े होंगे. Let's talk about Taurus. Taurus is run by the planet Venus. अगर फोर्थ हाउस में Venus हो, then not Venus, but अगर फोर्थ हाउस Taurus का हो, then these individuals have lot of security in their house. अच्छा घर बनाते हैं, strong attachment to family traditions, financial security भी अच्छी होती है, and they tend to have lots of plants and etc. in the house. अगर Aries और Taurus जैसे, अगर husband Aries हो, wife Taurus हो, then we know that one is more aggressive, one is more receptive. This is a good placement. जब शादी करते हैं और कुंडली मैच करते हैं, we don't necessarily look only कि 36 गुण मैच कर रही हैं. एक ओवरलैप होती है चार्ट, इन विच वी ओवरलैप एंड वी स्टडी द फोर्थ हाउस इन डिटेल, फर्स्ट हाउस, सिक्स्थ हाउस, हर एक चीज कि हाउ विल यू डू कंपैटिबिलिटी वाइज अगर एक ही घर में रहेंगे. नेक्स्ट विल बी जेमिनाई. जेमिनाई इंटेलेक्ट का घर है, राइट? दिस इज पीपल हु जनरली, अगर तुम दोनों जेमिनाई हो, देन it makes for a marriage or relationship which is based on common interests as opposed to desire for each other. ऐसे लोग जैसे दो डॉक्टरों ने शादी कर ली, I'm not saying for all the listeners, but two lawyers who get married, they tend to be talking almost always about work. They don't Right. focus on family life. They don't focus on life as a whole. They focus on क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे. तो ये प्लेसमेंट थोड़ी इंस्टेबिलिटी दे देता है. We don't really like two zodiac signs, Gemini, in the same fourth house for husband and wife. Cancer. Cancer तो nurturing है. तो अगर दोनों का कैंसर हो तो इट इज ब्यूटीफुल. स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट्स टू फैमिली, फैमिली वैल्यूज, होम कुकिंग, एटसेट्रा. दे लव होम लाइफ एंड दे वैल्यू इट. अब आ जाता है नेक्स्ट, लियो. लियो इज रन बाय सन. लियो एक वार्म ड्रामेटिक होम एनवायरनमेंट देता है जो आपकी पर्सनालिटी दिखाता है. दीज पीपल आर वेरी प्राउड ऑफ देयर हाउस, प्राउड ऑफ देयर फैमिली अकॉम्प्लिशमेंट. You will see them have big stickers. My son is high school valedictorian. माय हाउस, घर के बाहर बड़े बड़े बैनर्स लगाएंगे, बड़ी फोटोज देखेंगे उनके घर में, फैमिली की बिग पोस्टर्स ऑफ हु दे आर. दे वांट टू क्रिएट मेमोरेबल फैमिली एक्सपीरियंसेस. ये ऐसे लोग हैं, आप उनके घर जाओगे, दे विल स्टार्ट शोइंग यू फैमिली वीडियोस व्हिच जस्ट केम फ्रॉम अ क्रूज ट्रिप. ये देखिए हाउ मेमोरेबल दिस वाज. इवन विद देयर फ्रेंड्स दे डू दैट. फिर वर्गो आ जाता है. वर्गो इज प्रिसिशन एंड डिटेल इन द हाउस. यहाँ की यहाँ चीज नहीं हिलनी चाहिए. हेल्थ कॉन्शियस घर है. वी आर गोइंग टू बी वीगन ईटर्स. प्रैक्टिकल घर होना चाहिए हमारा. पोटेंशियल फॉर क्रिटिसाइजिंग अदर्स, ट्राइंग टू बी परफेक्शनिस्ट. ये जो मॉडर्न व्यूज है, दे आर गुड, बट ये एक इशू कर सकते हैं विद आउटसाइडर्स इन द हाउस. So you will realize, Vedika, as I'm going through this, so far Cancer is the only sign which is compatible with Cancer in the fourth house. Yeah. And if you go through astrology, you'll realize Cancer ke baad next is Leo. Leo is the only sign compatible with Leo in the fifth house, and so on. Hmm. अब आता है Libra. Libra is run by Venus. ये harmony, balance देता है, beauty in a relationship, and so on. Excellent sense of design. Aesthetically, good houses होते हैं. They have good values for marriage. Modern interpretation of marriage is very well recognized. Their family system is good.
एक एक होता है, ये फादर है, ये मदर है, ये बच्चे हैं, इनके ये राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, इट्स डन वेरी वेल। अब आता है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो हो गया मार्स। इमोशनल इंटेंसिटी आती है इस घर में। ये होम्स आर ऑफन प्राइवेट स्पेसेस। दे डोंट शेयर देयर फैमिली और फैमिली डिस्कशंस विद एनीवन। दे लाइक टू कीप इट पर्सनल। ये कॉम्प्लेक्स फैमिली डायनामिक्स भी हो सकती हैं यहाँ। अटैचमेंट तो बहुत होती है, बट बाहर की दुनिया को नहीं पता चलता कि इनके घर में क्या हो रहा है। सैजिटेरियस, धनुष, बो एंड एरो, expansive घर, adventurous family. They like multicultural things. They generally will live far from their birthplace. ये अपना घर एक एजुकेशन सेंटर बना देते हैं। पढ़ते हैं, लिखते हैं, घर से काम करते हैं, frequent relocations. Mhm. It's very nice. Modern interpretation ये है कि they broaden their horizon and perspective in family life. So again, Taurus, Cancer, Libra, Sagittarius are very good signs for fourth house. अब आता है Capricorn. ये एक स्ट्रक्चर देता है, पहले भी कहा था, शनि का घर है, ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज, होम स्टेटस सिंबल है, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक है, लाइफ में काम करो घर लो, दैट्स व्हाट दे से, बट दे एंजॉय देयर लाइफ लिटिल लेट इन लाइफ, देयर हाउस। Aquarius, similar to Capricorn, but unusual family structure होता है because something can go wrong in that particular house. ये एक फॉरवर्ड थिंकिंग स्पेस होती है। हमने घर अभी नहीं लेना, लेंगे जब पैसे आएंगे ना, पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे। We will make money in a different way, pay off the house once and for all. We don't want to live on mortgage. उनकी बात है ये। And finally, Pisces. Pisces is considered to be the last zodiac sign run by Jupiter. Dreamy spaces होती हैं, artistic, spiritual. In all, it's a very nice placement. Pisces is also good. So Pisces, Sagittarius, Taurus, Cancer, Virgo, Hmm. and Libra. Very good placements for fourth house. If you have a partner, you have to see आपकी zodiac sign क्या है और पार्टनर की zodiac sign क्या है और फोर्थ हाउस क्या है। आपको बहुत पता चल जाएगा कि लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे होगा। We have 4 minutes left and जी Vedika has a question. घर खरीदने बेचने का टाइम क्या है? जी because we are talking about fourth house, which is responsible for your home, your place to stay, where you stay and grow. So then, what is the right time, and what are the right situations in which you should buy or sell? ये क्वेश्चन बहुत आते हैं हमारे पास। First of all, you have to look at your career, right? Is your job stable? Can you pay the mortgage? Mm-hmm. Assuming वो सब ठीक है, now this is going to be tricky. फेवरेबल कंडीशंस होती हैं घर खरीदने की या घर बेचने की जब जुपिटर इज ट्रांजिटिंग योर सेकंड, फोर्थ और एथ हाउस। सेकंड इज होम ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फोर्थ इज योर होम एंड एथ इज शेयर्ड एसेट्स। तो अगर जुपिटर आपके सेकंड, फोर्थ या आठवें घर पे जा रहा है, गुड टाइम टू यू टू बाय हाउस। अगर एक Okay. बेनिफिशियल एस्पेक्ट है, विच मीन्स एस्पेक्ट मीन्स दृष्टि, Mm-hmm. बिटवीन ट्रांजिटिंग जैसे गोचर है, वीनस, जुपिटर या शनि अगर आपके फोर्थ हाउस पे जा रहे हैं, इट इज कंसिडर्ड अ गुड टाइम टू बाय और सेल अ हाउस। अगर एक न्यू मून है इन अर्थ साइन और ये फोर्थ हाउस पे भी एस्पेक्ट कर रहा है या फोर्थ हाउस के रूलर पे एस्पेक्ट कर रहा है, गुड टाइम टू बाय अ हाउस। सो इफ यू कम टू मी एंड से हमें घर लेना है, वी विल सिंपली ओपन योर चार्ट एंड वी विल लुक एट अ ट्रांसिट चार्ट। Mm-hmm. अगर जुपिटर चौथे, दूसरे या आठवें घर पे है एंड एट द सेम टाइम वीनस या जुपिटर की दृष्टि या शनि की दृष्टि पड़ रही है, गो बाय द हाउस नाउ। इट मेक्स सेंस। ये घर आपके लिए अच्छा होगा। दिस हाउस इज गोइंग टू गिव यू गुड प्रॉस्पेरिटी, वैल्यू बढ़ेगी। ऑन द फ्लिप साइड, अगर आपका घर बेचना है, इट्स अ गुड टाइम। डू नॉट बाय और सेल अ हाउस इन मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड। डू नॉट बाय और सेल अ हाउस इन मार्स रेट्रोग्रेड। Mars will cause delay, conflict. Do not buy or sell a house during an eclipse. Do not buy or sell a house जब शनि आपके फोर्थ हाउस के रूलर को देख रहा है।
because वो एक restrictive condition डाल देगा. You will be so emotionally attached you won't be able to buy or sell. ये simple rules थे. To repeat it again, transit of Jupiter in 4th, 2nd or 8th house, benefic aspect of Venus, Jupiter or Shani on your 4th house, Fourth. Mhm. and do not buy अगर eclipse है, अगर Mars retrograde है, Mercury retrograde है, या अगर शनि आपके चौथे घर के मालिक को देख रहा है. Easy rules, successful rules to buy or sell a house. Good way to make sure your house is prosperous, it is growing. अगर आप ये accept कर लो कि ये आपकी कुंडली में है, you will channel your energy in building the right house. You will be more happier, more prosperous in your life. Summarized perfectly. And listeners, आप website पे जाके, which is saketbhatia.com, you can put your information, your date, place, and time of birth, and make your own chart and see if this time is good for you if you are looking for a property, buying or selling, whatever it is. And if you have questions, always connect with Dr. Bhatia directly by calling 408 639 5300. And the website, once again, it's saketbhatia.com. Thank you so much for joining us today on air, and we'll talk to you again on Tuesday. Thank you. Have a good evening to all the listeners, and goodbye, Vedika. Talk to you soon. Bye. Radio Zindagi. KZDG 1550 AM, San Francisco